Hello guys, welcome to the platform of ClatPrep and my name is Tarun, and as you all know that we are doing some Hindu के जो newspaper के articles की क्या हमारी approach रहनी चाहिए students who are preparing for different exams, right? Not only for CLAT, because newspaper is the thing which has every genres, हर तरीके की news उसके अंदर होती है, हर तरीके जो GK है उसके लिए भी आपके लिए बहुत beneficial है, plus English के लिए of course if you go through English newspaper then it is beneficial for your English and to develop your language, right? So today, as you can see that this is the Hindu Bollywood. So we'll see today the genre of glamour, the words, the inferences, how you should read. And as I always ask my students, I always suggest them that you should always cover all the genres of the newspaper, because in your paper, if you people have seen that you people have passages of Bollywood to sports to economics, politics, right? Spirituality, philosophy. So we should always cover all these genres, right? So we have covered crime, we have covered legal, we have covered editorial. Now today we are going to cover this Bollywood genre, right? Then in the next one, we will be coming up with the whole newspaper, that what should be your approach and how you should deal with the whole newspaper, right? And our objective should be to cover the whole newspaper. You should not stick only to editorials, because editorial is the opinion, and opinion can be developed by reading news first, right? So we should cover news first. Fine. It's a very burgeoning topic, as we all know that we have covered that word burgeoning, right? It's a good word, right? Burgeoning, that means जो seething topic होता है, जो seething का मतलब वैसे तो boiling होता है, but we can use seething issues as well, जो कि बहुत गर्म है, ज्वलनशील है. And अभी आपने देखा होगा एक आलिया भट्ट की फोटो भी वायरल हुई थी, जिसके अंदर आलिया भट्ट has claimed, right, that some paparazzis were there. So paparazzi is a very good word, ये अपन को पढ़ने को मिलेगा भी. The one who clicks photographs without permission, right? Sometimes we also do it with our siblings when they are sleeping in a very weird or absurd manner, right? किसी का मुंह खुला कोई ऐसे सो रहा है तो हम भी उसकी चुपके से जाके फोटो खींच लेते हैं, फिर बाद में उठता है तो दिखाते हैं. So that act is also known as, the one who does such kind of acts, they are known as paparazzi. Fine. So let's start reading this. Bollywood celebrities have expressed solidarity after Alia Bhatt called out a media organization for clicking and publishing pictures of her without her consent, right? Consent, we all know that it is assent, right? ये इसका synonym होता है assent. That is also to give permission to someone. और दोनों के बाद ही use लगता है to. Right, they have given their assent to, they have given their consent to, right? So across social media, तो Bollywood जो celebrities है उन्होंने अपनी एकता दिखाई है जब आलिया भट्ट ने कॉल आउट करा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कि yes, they click and publish pictures of her without her consent, right? आपको consent is a very common word which you all know. Across social media, actors like Anushka Sharma, Janhvi Kapoor and Sushmita Sen reshared Alia's post and recounted facing similar incidents, right? I hope everybody has understood till here. Filmmaker Karan Johar and actor Arjun Kapoor also shared strongly worded post condemning, right? Condemning is a very good word. ये इसकी synonyms अपन देख चुके हैं, like slander. When you condemn someone, by words in a statement, in a written format, then it is known as slander. Then we can have vilify also. Vilify भी होता है किसी को condemn करना. It's a very good word. Then people can have one more word for that. That is libel. ये आप लोग legal में भी पढ़ते हैं, libel, right? So it is also like condemning किसी को करना. The invasion of privacy, right? तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही strong words के अंदर इन्होंने उस जो post है उसको condemn करा है, and the invasion of privacy. किस चीज को condemn करा उन्होंने? The invasion of privacy. जो invasion है, invasion is again a good word. It is like intrusion जो होता है, घुसपैठ करना, invade, right? तो उसी से बना है intrude, और intrude से बनता है intruder, राइट? जैसे इन्वेजन जो है जो करने वाला उसको हम कहते हैं इन्वेडर, और जो इंट्रूड करते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रूडर, राइट? तो इंट्रूजन और इन्वेजन, राइट, दे आर द सेम थिंग. लाइक इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, जब आप पढ़ेंगे ये टेररिस्ट के लिए यूज में लिया जाता है, इन्फिल्ट्रेशन, इन्वेजन, इंट्रूजन, राइट? जब आप घुसपैठ करते हो, और घुसपैठ से थोड़ा सा एक छोटा फॉर्मेट होता है, दैट इज अतिक्रमण करना, दैट इज ट्रेसपास और एनक्रोचमेंट, राइट? सो ट्रेसपासिंग भी होती है. यू विल कम अक्रॉस दीज वर्ड्स while going through a
that if you are using somebody's property for your movement, right? जब आप किसी के घर में से, अपने गांव में देखा होगा कि कईयों के घर में से पीछे गली का रास्ता निकलता है, तो people they trespass, right? Trespass is that you are using that what you call property, right? Encroachment होता है, आपने देखा होगा, ये भी आपको अखबार में पढ़ने को मिलता होगा, जैसे कि जो गवर्नमेंट है कई बार ये एंटी एनक्रोचमेंट कुछ मूवमेंट चलाते हैं, that they remove the encroachments by the vendors when they come out of their shop or their premises and they cover the public property and they put and this do business on the public property, right? तो चलाते हैं, अभियान चलता है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, they remove the encroachments, right? अतिक्रमण जो हो रखा होता है सो इसके लिए अपन एक वर्ड रखते हैं, दैट इज इंट्रूजन, राइट? इट्स अ गुड वर्ड, ये अपन को देखने को मिलेगा. सो अनुष्का शर्मा रोट हाउ द सेम ऑर्गेनाइजेशन हैड पब्लिश पिक्चर्स. अनुष्का शर्मा ने भी लिखा कि कैसे सेम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले उसकी पिक्चर्स भी पब्लिश करी थी विदाउट हर परमिशन सम ईयर्स अगो. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग दिस. अबाउट 2 years ago we called them out for the same reason. You would think it would have made them more respectful of people's space and privacy. तुम्हें लगता है, तुम सोचोगे कि हो सकता है लाइक दे आर लाइक उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्टफुल बनाता है पीपल के स्पेस और प्राइवेसी को पब्लिश करने से. एब्सोल्युटली इट्स एब्सोल्युटली शेमफुल. दे वर ऑल्सो द ओनली गाइज posting photos of her daughter despite repeated requests, Anushka wrote on Instagram stories. Fine, it's very easy. Slamming the breach of privacy. Breach, you all know, that is to break, right? Or void करना किसी चीज को, that is known as breach of contract. आप पढ़ते ही हैं. So it is slamming the breach of privacy. What is slamming? We all know, we have filled the slam book as well, but that is slam book is something else. But उसका मतलब, वैसे slam का मतलब होता है भिड़ाना किसी चीज को जोर से, right? Grand slam भी होता है. And आप भी कई बार गुस्से में जब पेरेंट्स को we cannot speak anything out, so we just show our anger, we show our wrath by slamming the door, right? तो यहाँ पर slam का मतलब भिड़ाना ही है. That's यहाँ पे उसको स्लैमिंग द ब्रीच मतलब उसको कंडेम करते हुए, उसको जोर पे बोलते हुए, स्लैमिंग द ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. आलियाज स्टूडेंट ऑफ ईयर डायरेक्टर करण जौहर ने भी लिखा है उसको स्लैम करते हुए ब्रीच ऑफ प्राइवेसी को. देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू दिस एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग इन्वेजन. वो कह रहे हैं कि इसका कोई आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, इसका आप कोई तर्क नहीं दे सकते हो. ये एक एब्सोल्युटली बहुत ही वाहियात तरीका है प्राइवेसी को इन्वेड करने का. दिस इज मतलब जो प्राइवेसी को इन्वेड करना है वो बहुत ही घटिया चीज होती है. एंड एवरीवन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज ऑलवेज फॉर द मीडिया एंड द पापाराजी, राइट? पापाराजी इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसमें पापा बिल्कुल नहीं हो राजी. दैट मीन्स क्लिकिंग फोटोग्राफ ऑफ द अदर पर्सन विदाउट इट्स कंसेंट. The one who does that is known as paparazzi, right? And the paparazzi and are accommodating, but there has to be a limit. लेकिन इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए. उन्होंने कहा है कि everyone from the entertainment industry is always for the media, कि वो हमेशा मीडिया के लिए, मतलब they are always open for media and paparazzi and are accommodating, और वो हमेशा करते ही हैं, but there has to be a limit. This is about anyone's right to feel safe in their own homes. This is not about actors or celebrities. It's a basic human right, right? So Karan Jauhar is saying that this is a basic human right. It is not about celebrities. Fine. I hope we all have understood and we have seen the good vocabulary too. So let's move to the next. Arjun Kapoor, who worked with Alia in 2014, film 2 states call it a shameless act equivalent to stalking. Stalking is again a very good word which you're gonna see in the crime vocabulary which I have shared, like we have I have taught you as well. Stalk is a very good word. Stalkers होता है, आपने देखा हो, the one who chase, the one who persuade, right? जो follow करते हैं, जो आपका पीछा करते हैं. कुछ internet stalkers भी होते हैं, right? So जो आपका पीछा करते हैं, आपको follow करते हैं, right? आप कई बार सड़कों पे भी करते हो, so that is they are known as stalker, or stalk is a word. Okay. Absolutely shameless. So he has also vilified that thing, that it is totally shameless. He has also condemned, he has also libeled that. So this is crossing all limits. If a woman isn't feeling safe in her own home, forget if she is a public. कि अगर वो अपने घर में ही सेफ महसूस नहीं कर रही, तो आप सोचें कि अगर वह पब्लिक में होगी. इफ शी इज अ पब्लिक, राइट? शी इज अ पब्लिक, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? दैट वह जनता नहीं है, मतलब कि यस, अगर वो जनता के बीच में, लाइक अगर वो आम जनता की तरह घूम रही है, तो उसके लिए कितना अनसेफ रहेगा. ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इट. फिगर और नॉट फॉर अ सेकेंड, मतलब इसको अगर आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते एक सेकेंड के लिए. एनी सेन
person. Sane is a very good one. Sane is like the one who is savant, जो intelligent है, जो जिसका थोड़ा सा दिमाग काम करता है. Sapient, logical, right? So these are good words. The prudent, जो थोड़ा सा भी सेन है. इसके जो एंटोनिम्स अगर आप देखेंगे, दे आर वेरी गुड वर्ड्स. आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स दैट यू शुड यूज दीज वर्ड्स विद योर सिबलिंग्स, ऑन योर सिबलिंग्स समटाइम्स. लाइक इसके अगर ऑपोजिट आप देखें, लाइक इनसेन आप सभी को पता है, दैट इज पागल, right? Then we have moron, जो इसके antonyms होते हैं. Moron, you people have heard it with your by your friends or in the movie too, right? और भी इसके लिए अच्छे वर्ड जो हमारे पेपर में आता है, दैट इज इम्बिसाइल इज अ गुड वर्ड, जो कि यूज करा जाता है बेवकूफ के लिए. और ये आप लोग अपने भाई बहनों पे भी यूज कर सकते हो कि बार व्हेन यू हैव अ फाइट, सो रेदर देन कॉलिंग देम स्टूपिड और समथिंग, वी कैन कॉल देम निटविट, वी कैन कॉल देम इम्बिसाइल. में से एक भी जो अच्छा वर्ड आपको लगे, आपके एग्जाम में भी आ रखे हैं दोनों ही वर्ड, इम्बिसाइल एंड निटविट. प्रूडेंट भी आ रखा है, सेवेंट भी आ रखा है, राइट? सो दीज आर गुड वर्ड्स. सो आई होप आप समझ चुके हैं अभी तक. और वोकैबुलरी को याद करने का एक तरीका होता है. आई एम ट्राइंग टू टेल यू द मेथड एंड काइंडली जस्ट फॉलो दैट मेथड एंड यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्जामिनेशन. सो एनी सेन, जो भी समझदार है, जिसका थोड़ा सा लॉजिकल है पर्सन, हु टेक्स फोटोग्राफ्स ऑफ पब्लिक फिगर्स फॉर लिविंग नीड्स, जो अपने जीवन व्यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जो अगर ऐसा वो करता है कि यस, जिनका काम ही यही है, नीड्स टू नो दैट दिस इज अ पैथेटिक कंडक्ट. लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि यह एक बहुत ही वाहियात, रिडिकुलस कंडक्ट है. एंड दीज आर पीपल इन द मीडिया वी हैव ट्रस्टेड. और ये वही लोग हैं मीडिया में जिनको हमने भरोसा करा एंड शोन इम्प्लिसिट फेथ, और उनके ऊपर हमने खुलकर फेथ दिखाया इन बिलीविंग दे आर हियर टू डू अ जॉब, कि वह यहां पर जॉब के लिए है, नॉट टू मेक वुमेन फील अनसेफ, ना कि वह किसी औरत को अनसेफ फील कराने की. और इन्वेड, राइट? वी हैव डिस्कस दैट वर्ड. इन्वेड होता है एज अ वर्ब, राइट? और इन्वेड वंस प्राइवेसी. फाइन, ओके. दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग. और यह स्टॉकिंग, पीछा करना, स्टॉकिंग इज अ नेगेटिव वर्ड. जब आप किसी का पीछा कर रहे होते हो कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, जासूसी के तौर पर, या उसको परेशान करने के लिए. कई बार होते हैं जिल्टेड लवर्स, जो ठुकराए हुए आशिक होते हैं, राइट? दे ऑल्सो व्हाट डू यू कॉल स्टॉक द पर्सन. सो यह भी एक स्टॉकिंग से कम नहीं है. शॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग, मतलब उससे कम नहीं है. अर्जुन रोड टैगिंग द मुंबई पुलिस, राइट? तो उन्होंने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए सारा कुछ लिखा है. Taking to Instagram on Tuesday, Alia shared a couple of paparazzi pictures of herself at her home, right? जिसके अंदर वो बैठी हुई थी और उसके बगल की बालकनी में से किन्हीं दो ने लिए है फोटोग्राफ. The Brahmastra and RRR actress said the pictures were clicked by two men perched on. It's a very good word. ये आपको पैसेज में मिलेगा, आपके मॉक्स में भी है, हमारे जो क्लैट प्रेप के मॉक्स है, आपको उसमें भी वर्ड मिलेगा, इवन आपके पेपर में भी आया हुआ है. और इसके साथ हमेशा ऑन लगता है, ध्यान रखें, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग द अदर एग्जामिनेशन, देन ऑल्सो यू शुड बी गुड एट योर prepositions too. And I have always asked you that whenever you have to be dexterous in preposition, then you should always while reading newspaper you should check, right, किस वर्ड के बाद कौन सी preposition आती है. पर्च का मतलब जो पक्षी किसी ब्रांच को जो पकड़ के बैठते हैं, that is known as perch, right? So ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मास्त्र और आरआर के जो एक्टर थे, उन्होंने कहा कि पिक्चर्स तब ली गई है, मतलब ये उनके द्वारा खींची गई, किनके द्वारा? by two men perched on the neighboring terrace, जो बगल के छत पे बैठे थे. She wrote in the accompanying note, are you kidding me? I was at, मतलब क्या मतलब ना, are you kidding me मतलब what? Seriously? So I was at my home, I was at my house having a perfectly normal afternoon sitting in my living room when I felt something watching me, right? तो कह रही थी कि मैं बैठी हुई थी और एक बढ़िया दोपहर थी, अपने घर पे बैठी हूँ, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है. और जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि दो जो आदमी बैठे हैं टेरेस के ऊपर पड़ोस वाले बिल्डिंग पे, एक कैमरा लेकर, और जस्ट एट मी, द कैमरा वाज राइट एट मी. इन व्हाट वर्ल्ड इज दिस ओके एंड अलाउड? और ये कौन सी दुनिया में सही और इसको अलाउ किया जाता है, राइट? This is a gross invasion of someone's privacy, and it's safe to say all lines were crossed. और यह अब सही है कहने के लिए कि सारी हदें पार हो गई हैं, और उन्होंने ये टैग कराया मुंबई पुलिस को. एंड शी एडेड, जानवी कपूर रिकॉलिंग सिमिलर ऑर्डियल्स. ऑर्डियल्स इज अ वेरी गुड वर्ड. ऑर्डियल का मतलब होता है जब आप किसी से कुछ पनिश करने के लिए, उसको आप कुछ राज उगलवाने के लिए, उसके अंदर कोई अगर भूत प्रेत आ गया, तो जो उसके अंदर आप उसको जो सिविल जो उसको टॉर्चर देते हो, दैट इज
known as ordeal. So वो कह रही है कि similar ordeals were with the media house, कि उनका भी ऐसा एक experience रहा है, ऐसे ही कुछ ordeals, right, torturing incidents वो रहे हैं, and this is disgustingly intrusive, right? I have told you that intrusion है, intrusion से बना intrusive, और जो ऐसा करते हैं they are known as intruders. So this is disgustingly intrusive. This publication has repeatedly done things like that. They are talking about media publication कि उन्होंने ऐसी हरकतें बार बार करते हैं, including despite my, कह रही कि including despite my, we were here that including despite my continuous request, photographed me unaware, right? They have photographed me. She's again what we call accusing the media that they have photographed me unaware inside the gym I go to while working out through the glass door in a space that is supposed to be private, where one does not anticipate to get, जो सोचता ही नहीं है, right, कि वो फोटोग्राफ हो जाएगा, उसकी फोटोग्राफ खिंच जाएगी. अब आप देख रहे हैं photographed, so it is a verb here, right? Okay, I understand showing up to places and in plain sight and doing your job. They all say that yes, they are doing, उनको लगता है कि वो अपना काम करें, but sometimes they cross their limit. Where there is a mutual understanding of the job of the photographers and the job and requirements of being a public figure. This stealthiness is a very good word. स्टेल्थीनेस होता लाइक जो चुपके से, जब आप चोरी छुपे कोई काम करते हो, राइट, ये स्टील से बना है स्टेल्थीनेस, राइट, दैट इज चोरी छुपे. अब मैंने यूज भी करा था स्टेल्थीली. समटाइम्स यू एंटर योर पेरेंट्स हाउस, पेरेंट्स रूम समटाइम टू गेट द व्हाट यू कॉल चार्जर if your mother is sleeping, and if you want you that you do not have to make noise, but it is very urgent, right, because without charger if your battery is discharging, so definitely you have to go because it is like life taking, and we have to, हमारी जान चली है लेकिन फोन जरूर चालू रहना चाहिए. तो बच्चे कई बार अपन जाते हैं ऐसे दबे पांव, like with cat paws, right, जैसे बिल्ली के पंजों की तरह. So that is known as stealthiness, को हम sneakingly भी कहते हैं. स्नीक इनटू, स्नीक का इसी से बनता है आपके स्नीकर्स जो आप पहनते हैं, जो आपके पीटी शूज आते हैं, दे आर दी स्नीकर्स जो बिल्कुल आवाज नहीं करते हैं, राइट, इसलिए दे आर नोन एज स्नीकर्स, राइट. तो स्टेल्थीली, अब अगेन दिस स्टेल्थीनेस जूमिंग इनटू समवन्स प्राइवेट पार्ट, कि ये जो चोरी चुपके जूम करना किसी के प्राइवेट स्पेस विदाउट देयर कंसेंट और इवन अवेयरनेस एंड कॉलिंग इट एक्सक्लूसिव एज इफ इट्स अ जर्नलिस्ट अकम्प्लिशमेंट इज फार फ्रॉम इट, राइट. और ये as if it is a journalistic accomplishment is far from it. मतलब ये एक बहुत ही दूर है जर्नलिज्म से. It is not like journalism. Alia's mother-in-law Neetu Kapoor also reshared her post and wrote, "This is not right." Last month, Alia with husband Ranbir Kapoor had met the paparazzi in Mumbai and requested them not to click pictures of their newborn daughter Raha. Okay, fine. So I hope we have comprehended the passage and we all have understood. अब इसमें से अगर देखो हम समझ में आ जाता है तो we can come up with main idea, right? We can infer that कि कहाँ पर आपको पढ़ के लगता है कि मीडिया वाले जो ये अपने बॉलीवुड वाले हैं, they support journalism, या they have sympathy with them. So we can come out with such kind of questions too, right? But the important thing is that first we need to understand, and yes, build up your vocabulary, and I have told you how to do it, and kindly focus on grammar part too, and try to comprehend the things. That is very much. And yes, another thing that we should what you call read different genres so that we can have the vocabulary, because अगर मैं political पढ़ रहा हूँ तो उसमें paparazzi word नहीं आएगा, अगर मैं economics पढ़ रहा हूँ तो भी उसमें नहीं आएगा, अगर मैंने अब crime what you call if I go for what you call spirituality, तो उसके अंदर शायद paparazzi नहीं आएगा. But yes, I have to go for such kind of passages too, and kindly don't confine yourself to only editorial, right? Because they are the opinions. We have to be aware about the news. Then it gets very easy for us to get the opinions. Fine. And in the next video, we'll be coming up with the whole newspaper, that how we should go through the whole Hindu newspaper, or yes, we'll go with the Hindu newspaper. So see you in the next video. Till then, take care.